Hello everyone, this is Shilpa Sharma, Faculty, Management Department, Simaj Group of Institutions, Patna. This video is going to be about health and safety at workplace, one of the most important things that human resource management of an organization has to take note of. Since health and safety are big topics, big in the sense that these are really important topics, and health and safety both should be dealt with sometime, giving justice to both of the topics. So I will split this video into part 1 and part 2. The part 1 is going to be about health, and part 2 will be exclusively focused towards safety. This topic is also there in the syllabus of AKU for BBA students, and otherwise also the concept of this health and safety at workplace in sense of HR is important for all the students who are studying management. Now let's start the topic health. If you want to understand the seriousness of this topic or the importance of this topic, you may recall the period of Corona pandemic. There was a great havoc across the organizations, not just in India but globally, regarding the health of employees. Even before pandemic, during pandemic and after pandemic, there were a lot of strategies maintained and had to be framed in order to deal with this matter of health of people. Several organizations lost its key employees in pandemic, and otherwise many other employees. So the number got reduced. We all know the concept of succession planning in HRP. All these concepts were shattered during pandemic, the organizations which lost its people. So therefore you can understand the importance of health. Even after pandemic, when people were requested by organizations to come back to organizations, they had to devise methods at their workplace, like marking suitable distance between two employees, giving instructions like not more than two people should gather at one place, or in corridors only, deviating the passage and making flowcharts in the organization to cut the contact between people. Several people, there are certain jobs, nature of jobs like airports. The employees who were working at airports were having their RT-PCR test almost every 3 to 4 days. In 3 to 4 months. So this was the problem that the health arising out of health issues during pandemic created. So you now understand what is the seriousness of health. Now, why this health has become an important issue, or since when this topic health became an important issue? There were two main factors. One, that after a proper trade union was formed in 1920, which was All India Trade Union Congress, which was formed at a national level. Before that, all the trade union were at regional level or at industry level. But this trade union necessitated the management regarding the importance that should be given to health of the workers, because this is proven by data that Indian workers during the British rule were one of the most underfed, starved and living in an extremely unhygienic conditions, in not just in India but in comparison to the entire world. They were the most pitiable. So this was one reason, formation of trade union. And second, the enlightened management also came to understand this, that if you have people who work in your organization healthy, the cost of production will go down, productivity will increase, they will be mentally and physically happy to work, and various other things that come along with this package with a healthy employee. If we look at laws, अगर हम रूल रेगुलेशन की बात करें, अगर हम अधिनियम की बात करें, so there are various laws. Government has definitely taken note of people's health in the acts that it has formed. For example, the Factories Act 1948.
द माइंस एक्ट 1952, फैक्ट्रीज एक्ट माने कारखाना अधिनियम, कारखाना में काम करने वाले लोग, और माइंस एक्ट जहाँ खान होता है, जैसे कोयला का खान, माइका का खान एक्सेट्रा। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए एक्ट में जो एक्ट इनके ऊपर लागू होता है, उस एक्ट में जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में एक चैप्टर 3 अलग से बनाया गया है हेल्थ के ऊपर। उस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि फैक्ट्रीज में क्लीनलीनेस कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयर को कैसे मेंटेन करना चाहिए क्लीनलीनेस, स्वीपिंग के बारे में, पेंटिंग के बारे में, वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के बारे में, जैसे जो कचरा निकल रहा है फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के बाद, उसको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए कि वो कम से कम हैजार्ड कॉज करे। आपको पता है कि एक्सेसिव हीट, क्योंकि फैक्ट्री में काम होता है तो हीट जनरेट होने की संभावना बहुत होती है। एक्सेसिव हीट को कम किए जाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, जैसे जिस एरिया से बहुत हीट निकल रहा है तो एक्सेस टेम्परेचर से वर्कर्स अनकंफर्टेबल हो जाएंगे वर्क प्लेस पे, और वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, बीमार हो सकते हैं। इसलिए वैसे जगहों का इंसुलेशन, इंटरनल कंबशन इंजन को किसी भी फैक्ट्री में तब तक नहीं जलाया जाना है जब तक कि चिमनी स्काई में, ओपन स्काई में ओपन नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री किसी भी चीज़ की कैसे भी चला सकते हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटेड बाय लॉज। इसके अलावा पीने के पानी की सुविधा, गर्मी में ठंडा पीने का पानी की सुविधा, टॉयलेट कैसा होना चाहिए, उसके अलावा अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट कम इन इट्स हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे सर्टिफाइंग सर्जन्स होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं जो यंग पर्सन्स को सर्टिफाई करते हैं कि ये फैक्ट्री में काम करने के लिए फिट है या नहीं। किसी भी तरीके का धुआं या डस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में निकलता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कपास, ठीक है, कॉटन, आपको पता है कॉटन एब्जॉर्बेंट है, वो फटाक से ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए ऐसी और ऐसी जैसी अदर फैक्ट्रीज में जो इन चीज़ों को डील करती है, वहां पर आर्टिफिशियली ह्यूमिडेशन क्रिएट किया जाता है। इस आर्टिफिशियल ह्यूमिडेशन को, क्योंकि आप उस चीज़ को इनहेल कर रहे हैं, किसी भी पानी से नहीं करना है। इसको करने के लिए आपको सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना है, ये भी मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर आप किसी ओवर क्राउडेड जगह पे थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि you psychologically feeling disgusted, you want open space. Imagine a worker working for 8 hours or doing overtime in such a situation. In some times that problem of overcrowding will take a toll on his health. That is why 14.2 cubic meter का डेटा, 14.2 क्यूबिक मीटर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइंड है कि इतना स्पेस दो वर्कर्स के बीच में होना चाहिए। छत की हाइट एटलीस्ट 4.2 मीटर्स होनी चाहिए। इसी तरीके से माइंस एक्ट में भी हेल्थ को लेकर के बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। नाउ ये तो एक्ट की बात हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको पता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ये लिबर्टी होती है कि वो अपने पैकेज में कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ एक्सक्लूड कर सकते हैं, ऑल्दो दे हैव टू बी रियली कॉम्पिटिटिव विद देयर कॉम्पिटिटर्स, बट स्टिल दे कैन डू इट। इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट आज के डेट में हेल्थ की फैसिलिटी in the form of benefit also is one of the major attractions why a person wants to join an organization. For example, if a person feels that the matter of health, his health is being taken care of in some organization properly, then the willingness of the person to join that organization will increase many folds, because the loss of a person's health is an irreparable damage. We all know that. So various organizations have devised plans in terms of, जैसे वो रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार किसी टेस्टिंग लैब से उनका कोलैबोरेशन होता है। अगर नहीं है तो वो किसी पास के हॉस्पिटल में मेडिकल रीइंबर्समेंट देते हैं या फिर वो एग्जीक्यूटिव मेडिकल रीइंबर्समेंट करते हैं। इसके अलावा रेगुलर चेकअप होना या फिज़िकल चीज़ों को ध्यान रखना, ये चीज़ें हेल्थ में आती हैं।
हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम सोचते हैं समथिंग विच यू कैन सी, सर्दी खांसी हो जाना, कहीं चोट लग जाना, कहीं ज़ख्म हो जाना, ये हेल्थ है, एक्सीडेंट हो जाना. बट आफ्टर पैंडमिक, one thing which became very loud in terms of health is the emotional and mental well-being of a person. आपको इमोशनली भी साउंड होना बहुत ज़रूरी है आपके गुड हेल्थ के लिए. यू नो दैट इज एन ओवर स्ट्रेस्ड पर्सन, अ पर्सन हु इज़ मेंटली नॉट साउंड, though he'll appear to be physically well, he is not. His productivity is going to decrease for sure. इसीलिए आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है और मेंटल वेलबींग के लिए कुछ चीज़ें हैं जो वर्क प्लेस पे की जाती हैं. एक तो पहले एम्प्लॉय की बेनिफिट्स को डिज़ाइन इस तरह किया जा रहा है कि एम्प्लॉय को काम करने में मज़ा आए वर्क प्लेस पे. समटाइम्स टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ टीम लंच और टेकिंग देयर people for a picnic or to visit some place. So this rejuvenates the mental status of a person and they will come back more enthusiastically to work. इसके अलावा योगा का कैंपेन, योगा सिखाना, काउंसलिंग करवाना, साइकोलॉजिकली काउंसलिंग कराना, साइकेट्रिस्ट वगैरह से कंसल्ट कराना, या एचआर डिपार्टमेंट में ही ओवर स्ट्रेस्ड लोगों के लिए काउंसलिंग होती है. तो ऐसी चीज़ें भी इमोशनल या मेंटल वेलबींग ध्यान दी जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आर ओनली अराइजिंग एट योर वर्क प्लेस एंड यू आर टेकिंग इट टू योर हाउस. मे बी द प्रॉब्लम इज एट योर हाउस एंड यू आर टेकिंग इट टू द वर्क प्लेस. सो इन ईदर केस यू नीड अ मेंटल काउंसलिंग टू एंश्योर दैट यू गेट रिड ऑफ इट. इसके अलावा फिजिकल वेलबींग के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि organizations are having their own gymnasiums, and if they don't, they feel the need of collaborating it with some local gymnasiums and giving you a membership card which is lower at a rate than other people who would go to that gymnasium. So I hope कि health के लिए आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि health is such an important factor for an organization, because after all only a healthy employee can lead to lower cost of operation and higher productivity in the organization. Thank you so much.